Hello and welcome back to Being Amrita, Chef and Beyond. Well, we are doing recipes for pregnancy time. Yes, some are healthy, some are those recipes that help you with your cravings, but again in a healthy way. This is one such recipe. गोलगप्पा खट्टा खाने का बहुत मन करता है, राइट? पर बाहर जाके बाजार का गोलगप्पा खाना not a good idea at all when you're pregnant, when you're carrying another life in your body. लेकिन cravings का क्या करें? मैं हूँ ना, आज हम बनाएंगे excellent yummy गोलगप्पे which are so tasty but superbly healthy as well. Let's begin. So सबसे पहले हम मिक्सचर बनाएंगे. इस मिक्सचर में कुछ आलू नहीं पड़ेगा, इसे हम बनाएंगे with chickpeas यानी कि काबुली चने. ये boiled हैं तो इन्हें हम अच्छे से बस मैश कर लेंगे. Actually I'm going to use a masher for this because ये उतने भी सॉफ्ट नहीं है जिस तरह से आलू होते हैं, जैसे आप अच्छे से हाथ से मैश कर सको. एंड आई पर्पसली केप्ट इट लिटिल क्रंची ताकि गोलगप्पों में खाने में ज़्यादा मज़ा आए. दिस इज डन. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द रेस्ट ऑफ माई अनियंस, थोड़े से चॉप्ड टोमेटोज, नाइस हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग, सम सॉल्ट टू टेस्ट, सम पेपर and some chaat masala, थोड़ी सी हरी मिर्च. Now I'm going to mix it. और इसके बाद मेरे हाथ बहुत जलने वाले हैं, but never mind. आप हरी मिर्च avoid करना चाहें तो please feel free to do that. Alright, now my filling is ready. मैं ज़रा हाथ धो लूँ. पानी जो इसमें यूज़ हो रहा है that is freshly squeezed pomegranate juice. Yes, use a muslin cloth, turn it into double and squeeze out the pomegranate seeds. अब इसमें मैं डाल रही हूँ कीनोआ. Very, very good source of protein, very good in minerals. After all, when you're carrying a baby, a lot of your minerals are going into creating that child, isn't it? So you need to get all of that back, and quinoa is a great source to provide all those minerals to you. तो हमने कीनोआ डाल दिया है इसमें. Now again, a little bit of salt, some pepper, some chaat masala. So now my masala is ready, my water is ready. I am going to start making my golgappa shots, or what do you want to call it? Healthy golgappas? Well, call it what you like, but taste में बहुत मज़ा आएगा. And this is absolutely perfect, especially when you're craving all that chatpata stuff while you're pregnant. So ये रही पूरी. This you can buy from a shop. They come nicely sealed in a packet, so you can trust them. थोड़ा सा इसे आप और इसका होल बनाइए ताकि the filling can go in properly. चाहें तो आप अपने हाथ भी यूज़ कर सकते हैं. I'm just trying to be a little elegant right now. Okay, इस तरह से हम सारे ये गोलगप्पे जो हैं ये भर लेंगे. So my puris are ready, and here are my shot glasses. इसके अंदर with the help of a ladle, I'm going to pour okay. Now with the help of a ladle, I'm going to pour my Pani Puri wala pani. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ी सी मीठी चटनी, हल्की सी घर की बनी हुई टैमरिन चटनी आप इसमें डालिए और बड़े प्यार से इसके ऊपर रखिए. And there you go. Our healthy Golgappa shots are ready. These are so irresistible. Even though I'm not pregnant, I'm dying to indulge. But before I do that, let me tell you that if you like this recipe, do like it and share it with all your friends. And don't forget to subscribe to Being Amrita, Chef and Beyond. I'll see you in the next episode.